Welcome to our channel, English with a Way. Please like, share, and subscribe. हेलो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद अ व्यूअर्स अॼु की इन वीडियो में असां क्लास 9th जे यूनिट नंबर 7 जी ट्रांसलेशन कंदासीं। यूनिट नंबर 7 आहे लाइफ स्किल्स, ज़िंदगी जूं महारत। हलूं था इन जे टेक्स्ट ते। Reading text, The Secret of Success, कामयाबीअ जो राज़। A long time ago there lived a king who was in search of the secret of success. घणो अरसो पहिरीं रहंदो हो हिकु बादशाह जेको ॻोल्हा में हो कामयाबीअ जे राज़ जे। He thought if he could find out the answers to 3 questions, हिन सोचियो त जेकॾहिं हिन खे 3 सवालनि जो जवाब मिली वियो त he would discover the secret and never fail. ही ॻोल्हे वठंदो राज़ खे ऐं कॾहिं बि नाकाम न थींदो। He thought and thought for many days. हिन केतिरनि ई ॾींहंनि लाइ सोचियो, but the answers evaded him. पर जवाब हिन खां बचंदा रहिया। So he called all his ministers and asked them these 3 questions. तंहिं करे हिन घुरायो हिन जे सभिनी वज़ीरनि खे ऐं उन्हनि खां ही 3 सवाल पुछा। Number 1, what is the most important time to start something? सभ खां वधीक अहम वक़्तु कहिड़ो आहे का शइ शुरू करण जे लाइ? Number 2, what is the most important work to do? सभ खां वधीक अहम कमु करण जे लाइ कहिड़ो आहे? Number 3, who is the most important person? सभ खां वधीक अहम शख्स केरु आहे? पर none of them could come up with a satisfactory answer. उन्हनि मां को बि हिकु मुतमईन कंदड़ जवाब न ॾेई सघियो। Next, बाद में he called all his courtiers and asked them the same questions. हिन घुरायो हिन जे सभिनी दरबारनि खे उन्हनि खां उहे साॻिया सवाल पुछा। They discussed and debated for long, but none of their answers satisfied the king. उन्हनि बहस मुबाहिसो कयो ऐं डिबेट कई काफ़ी देर ताईं, पर उन्हनि मां को बि मुतमईन न करे सघियो बादशाह खे। He then called the wise and learned men of his country to his court. हिन उन खां पोइ घुरायो अकुलमंद ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हुनि खे हिन जे मुल्क जे हिन जे दरबार में। He discussed the problem with them for many days. हिन बहस मुबाहिसो कयो मसइले जो उन्हनि खां केतिरनि ई ॾींहंनि ताईं। They too were unable to satisfy the king. उहे पिण क़ाबिल न बणिया बादशाह खे मुतमईन करण में। Because they could not see eye to eye with each other. छाकाणि जो उहे अखियुनि में अखियूं विझी नथे ॾिसी सघिया हिक ॿिए खे। And ended up arguing amongst themselves. ऐं आख़िर में बहस ते कयूं हिक ॿिए सां। They came up with many different answers. उन्हनि सभिनी केतिरा ई मुख़्तलिफ़ जवाब त ॾिना, but none of the answers provided any meaningful information. पर उन्हनि मां कंहिं बि जवाब न थे ॾिनो मतलब वारो हल। The king then asked his ministers to announce that बादशाह पोइ हिन जे वज़ीरनि खे चयो त ऐलान कनि whoever answers these questions, जेको बि हिननि सवालनि जा जवाब ॾींदो, would get a reward of 5000 gold coins. हुनखे हिकु इनाम मिलंदो 5000 सोननि सिकनि जो। Many people came and talked to the king. केतिरा ई माण्हू आया ऐं ॻाल्हायूं बादशाह खां, but their answers did not satisfy the king. पर हुननि जे जवाबनि मुतमईन न कयो बादशाह खे। At some distance from the capital, गादीअ जी हंध खां कुझु फ़ासिले ते, there was a jungle, हो हिकु जंग। The king had heard that, बादशाह इहो ॿुधो त in the jungle there lived an old wise man who was considered as saint. जंग में रहंदो हो हिकु ॿोढ़ो अकुलमंद शख्स जेको सम्झो वेंदो हो हिकु बुज़ुर्ग। He lived all alone, हू अकेलो रहंदो हो। His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. हिन जी शोहरत परे परे ताईं पखिड़िजी हुई त ही आहे अहिड़ो माण्हू जेको सभिनी जा मसइला हल करे थो। The king decided to consult the wise old saint. बादशाह फ़ैसिलो कयो त मशवरो कंदो ओड़े अकुलमंद बुज़ुर्ग खां। But the problem was he only mixed with the poor and needy. पर मसइलो इहो हो जो ही सिर्फ़ मिलंदो हो ग़रीबनि ऐं ज़रूरतमंदनि खां। He did not mix with the rich and wealthy. हू न मिलंदो हो अमीरनि ऐं दौलतमंदनि खां। Since the saint did not like meeting wealthy people, जीअं त बुज़ुर्ग पसंदि न कंदो हो मिलण दौलतमंद शख़्सनि खां, the king started thinking as how to approach him. बादशाह सोचणु शुरू कयो त हिन ताईं कीअं पहुचजे। The king pondered and thought deeply about a way to meet the saint. बादशाह गौर फ़िक्र कयो ऐं सोचियो गहराई सां त कीअं मिलजे बुज़ुर्ग खां। Soon he came up with a plan. जल्द ई हिन हिकु मंसूबो ठाहियो। He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint. हिन पंहिंजो लिबास मटायो हटल कपिड़नि में ऐं निकिरी वियो मिलण जे लाइ अकुलमंद पोड़े बुज़ुर्ग खां। Since he wanted to appear poor and destitute, जीअं त हिन चाहियो थे ज़ाहिर थियण हिकु ग़रीब ऐं बेवस,
He asked his servants to remain behind. हिन चयो पंहिंजे ग़ुलामनि खे त उहे पोयां रहनि. Alone he headed straight for the saint's hut. अकेलो हिन रुख कयो सिधो बुज़ुर्ग जे झूपड़े ॾांहुं. When the king arrived at the hut, जॾहिं बादशाह पहुतो झूपड़े ते, the saint was digging the ground in front of his hut. बुज़ुर्ग खोटे रहियो हो हिन जे झूपड़े जे अॻियां ज़मीन खे. He was old and weak. He पोढ़ो ऐं कमज़ोर हो. And as he worked, he was breathing hard. ऐं जीअं ही कमु करे रहियो हो त ही वॾा वॾा साह खणी रहियो हो, सहिकी रहियो हो. He tired quickly and stopped frequently to rest. ही जल्दी ई थकी पियो ऐं बीठो थे बार बार आराम करण जे लाइ. The king approached him. बादशाह हिन वटि पहुतो and addressed him directly. ऐं हिन खां सिधो ॻाल्हाई. Sir, I have come a long way to ask you the answers to 3 important questions. साईं, आऊं आयो आहियां तमामु परे खां तव्हां वटि पुछण जे लाइ 3 अहम सवाल. The king continued. बादशाह जारी रखियो. My first question is, मुंहिंजो पहिरियों सवाल आहे, what is the most important time to start some work? सभ खां अहम वक़्तु कहिड़ो आहे को कमु शुरू करण जो. My second question is, what is the most important work to do? मुंहिंजो ॿियो सवाल आहे त सभ खां अहम कमु करण लाइ कहिड़ो आहे. And third ऐं टियों, who is the most important person? केरु आहे सभ खां अहम शख़्स. Humbly the king continued. सादगीअ सां बादशाह जारी रखियो. Would you kindly help me by telling the answers? छा तव्हीं महिरबानी करे मदद कंदा मुंहिंजी ॿुधाइण सां ई जवाब to these questions हिननि सवालनि जा. The saint paid no attention to the king and continued digging. बुज़ुर्ग को बि ध्यानु न ॾिनो बादशाह ॾांहुं ऐं जारी रखियाईं खोटण. The king waited for a few moments and then said. बादशाह कुझु लम्हनि लाइ इंतज़ारु कयो ऐं पोइ चयाईं. Sir, you look tired. साईं, तव्हां थकल था लॻो. Let me dig the ground for you. मूंखे ॾियो त आऊं तव्हां लाइ ज़मीन खोटियां. The saint thanked him and gave him the spade. बुज़ुर्ग हिन जो शुक्रियो अदा कयो ऐं हिन खे ॾिनाई बेलचो. And the king started digging. ऐं बादशाह खोटण में शुरू थी वियो. After some time, the king repeated the questions and requested the answers. थोड़ी देर खां पोइ बादशाह वरी वरझाया सवाल ऐं दरख़्वास्त कई जवाबनि लाइ. But all that the saint said to the king was. पर जेको कुझु बुज़ुर्ग चयो बादशाह खे हो. Let me dig now. हाणे मूंखे खोटण ॾे. The king did not give him the spade. बादशाह हिन खे बेलचो न ॾिनो and kept digging. ऐं खोटींदो रहियो. He remained calm. ही ख़ामोश रहियो and did not lose patience. ऐं सब्र न विञायई. The hope that he would find the answers to his questions. इहा उमेद त हिन खे मिली वेंदा जवाब हिन जे सवालनि जा. Kept him motivated. हिन खे उत्साहिल रखियो and determined ऐं पुरअज़म. When evening fell, जॾहिं राति थी, and the light began to fade, ऐं रोशनी झकी थियण लॻी, he stopped digging and turned to the saint. हिन खोटण बंदि कयो ऐं मुड़ियो बुज़ुर्ग ॾांहुं. He said, हिन चयो, could you please let me have the answers to my questions now? छा तव्हीं महिरबानी करे मूंखे ॾींदा जवाब मुंहिंजे सवालनि जा हाणे. The saint remained silent and pointed to one side. बुज़ुर्ग ख़ामोश रहियो ऐं इशारो कयाईं हिक पासे. The king glanced in that direction. बादशाह निगाह विधी उन पासे and saw that a bearded man with a dagger in his hand was running towards them. ऐं ॾिठाई त हिकु ॾाढ़ीअ वारो शख़्स हिकु खंजर सां हिन तरफ़ तेज़ीअ सां डोड़ी रहियो हो. When he reached them, जॾहिं ही उन्हनि वटि पहुतो, he fell down and fainted. ही किरी पियो ऐं बेहोश थी वियो. The king straightway picked up the bearded stranger. The king, बादशाह, straightway उन ई वक़्तु picked up the bearded stranger. खयाईं ॾाढ़ीअ वारे अजनबीअ खे and carried him into the hut. ऐं उन खे झूपड़े में खणी वियो. And laid him down on the ground. ऐं उन खे लेटाईं ज़मीन ते. The king noticed that the man was injured. ऐं बादशाह ॾिठो त वो शख़्स ज़ख़्मी हो. So he immediately took steps to stop the bleeding. तंहिं करे हुन फौरी तौर ते क़दम खयां बंदि करण जे लाइ रत. And with the help of saint ऐं बुज़ुर्ग जी मदद सां he bandaged his wounds. हिन पटी ॿधी हिन जे ज़ख़्मनि खे. The bearded man fell into a deep restful sleep. ॾाढ़ीअ वारो शख़्स हिकु गहरी सुकून वारी निंड में हलियो वियो. By now night had fallen and it was very dark. हाणे ताईं रात थी चुकी हुई ऐं तमामु घणी ऊंदाहि हुई. The king was too tired to return home. बादशाह एतिरो थकल हो जो घर वापसि न थी वञी सघियो.
The saint invited him to stay the night and the king accepted the saint's hospitality. बुजुर्ग दावत ॾिनी बादशाह खे हू तरसे ऐं बादशाह क़बूल कई बुजुर्ग जी महिमान नवाज़ी. The saint prepared some simple food and provided The saint prepared some simple food. बुजुर्ग तयार कयो कुझु सादो खाधो and provided the king with a bedding of hay to sleep on. ऐं मुहैया कयाई हिकु कखनि जो बिस्तरो बादशाह खे सुम्हण जे लाइ. At break of day, फजर वारे वक़्तु, the king awoke. बादशाह उथियो. He found that the bearded man too was awake. हिन ॾिठो त ॾाढ़ीअ वारो शख़्स पिणु सुजाॻ हो. The king said, बादशाह चयो, How do you feel now? हाणे तूं कीअं महसूस करे रहियो आहीं? The bearded man replied, ॾाढ़ीअ वारे शख़्स जवाब ॾिनो, I am better now thanks to your majesty. आऊं हाणे बहितर आहियां तव्हांजी महिरबानी तव्हांजी अज़मत. Forgive me, मूंखे माफ़ करियो. I came to kill you because you had my brother killed. आऊं तव्हांखे मारण आयो छाकाणि जो तव्हां मुंहिंजे भाउ खे मारायो हो. I became your bitter enemy out of grief. ॾुख सबबु आऊं तव्हांजो सख़्तु दुश्मन थी वियो हुअसि. I was hiding and waiting for your return. आऊं लिको पियो हुअसि ऐं इंतज़ारु करे रहियो हुअसि तव्हांजे वापसीअ जो. As you did not return, जीअं त तव्हां न मोटिया. I came out of my hiding place. आऊं ॿाहिरि निकितुसि पंहिंजे लिकण वारी जाइ तां. That's when your servant saw me. ऐं उन वक़्तु मूंखे तव्हांजे ग़ुलामनि ॾिठो. They immediately recognized me. उहे फौरी तौर ते मूंखे सुञाणे विया. They wounded me seriously. उन्हनि शदीद नमूने मूंखे ज़ख़्मी कयो. But I escaped. पर आऊं भॼी वियसि. Had you not cared for me, I would have died. जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो ख़्यालु न रखो हा त आऊं मरी वञा हा. I thank you. आऊं तव्हांजो शुक्रियो अदा करियां थो. Now हाणे count on me as one of your most faithful servants. हाणे मूंखे तव्हांजे सभ खां वधीक मुख़लिस ग़ुलामनि मां सम्झो. Saying this, he saluted the king and left. इहो चवंदे हिन सलाम कयो बादशाह खे ऐं हलियो वियो. When the bearded man had departed, जॾहिं ॾाढ़ीअ वारो माण्हू वियो हलियो, the king again asked the saint for the answers to his questions. बादशाह हिकु दफ़ो ॿीहर पुछियो बुज़ुर्ग खां हुन जे सवालनि जो. The saint replied, बुज़ुर्ग जवाब ॾिनो, Your questions have already been answered. तुंहिंजे सवालनि जो पहिरीं ई जवाब मिली चुको आहे. First, the most important time was when you wanted to help him. पहिरीं सभ खां अहम वक़्तु हो उहो जॾहिं तव्हां हिन जी मदद करणु चाही थे. The most important work was the digging of the ground. सभ खां अहम कमु हो ज़मीन खे खोटणु. And I was the most important person for you. ऐं आऊं सभ खां वधीक अहम शख़्स होसि तव्हां जे लाइ. Had it not been so, जेकॾहिं इएं न हुजे हा, you would have returned and been killed. तूं वापसि हलियो वञी हा ऐं मारिजी वञी. The saint continued. बुज़ुर्ग जारी रखियो. The second time, ॿिए वक़्तु the most important man was the bearded man. सभ खां वधीक अहम शख़्स हो ॾाढ़ीअ वारो शख़्स. The most important work was dressing his wound. सभ खां वधीक अहम कमु हो हिन जे ज़ख़्म ते पटी ॿधणु. Had it not been so, जेकॾहिं इएं न हुजे हा, you would not have won a faithful servant. तूं न खटी हा हिकु मुख़लिस ग़ुलाम. You are very fortunate. तूं तमामु ख़ुशि नसीब आहीं. So this is the moral of the lesson. तंहिं करे इहो सबक़ु आहे हिन लेसन जो. The most important time for doing anything is the present. सभ खां वधीक अहम वक़्तु को बि कमु करण जो आहे हाल. The most important work is what we are doing now. सभ खां अहम कमु उहो आहे जेको असां हिन वक़्तु करे रहिया आहियूं. And the most important person is the one whom we are with at the moment. ऐं सभ खां वधीक अहम शख़्स उहो आहे जंहिंसां गॾु असां हिन वक़्तु आहियूं. इन सां गॾु असांजो ही लेसन थियो मुकमल. इंशाअल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.